students, good morning. Here I'm making video on different topics of linguistics, and first topic is duality of patterning. So as you listen this phrase, what comes in should come in your mind. Duality is double, patterning is pattern. So this is one of the most important and unique design features of language. Means language is designed in two layer, and this idea is given by Charles Hockett. What he says that there are two there are two layers, right? Two tier, right? When language is made with two levels, so first is it refers to the fact that language is structured. What he is saying that language is structured on two distinct level. How language is made, how language is structured, language का structure क्या है. So then there are two types of two layers of structure. First layer interesting है, very interesting part, right? First level or first layer you can say. Now second level or second layer, है ना? तो फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल. फर्स्ट लेवल क्या बोल रहा है? अ फाइनाइट सेट ऑफ मीनिंगलेस साउंड्स. बहुत ध्यान से समझना. finite set of meaningless sounds, right? And second layer is, first is sound layer, second is meaning layer. तो ये तो सिर्फ साउंड है, एंड दैट इज एन इनफाइनाइट सेट. दैट्स अ फाइनाइट सेट. इसका उल्टा, दैट्स अ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स. ये मीनिंगलेस साउंड था, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है ना? मतलब फर्स्ट लेयर इज जस्ट ऑपोजिट टू सेकेंड लेयर. हियर मीनिंगलेस साउंड्स, हियर मीनिंगफुल यूनिट्स, हियर फाइनाइट सेट, हियर इनफाइनाइट सेट. हाउ? आई विल ट्राई टू गिव वन एग्जाम्पल. Suppose you are a kid, right? And there are 44 IPA symbols are kept here in the box. Blocks are kept. आप छोटे बच्चे हो और ये ब्लॉक 44 ब्लॉक्स रखे हैं एक ए बास्केट में. So suppose you have picked up one sound in which K is written. You have picked up this sound and this sound. So then I will tell you, I will suppose I'm your mother and I'm teaching you K, O, O. So you may ask, what's the meaning of it? I will be speechless because there is no meaning of separate sounds. ये जो साउंड्स हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है. अकेले अकेले सेपरेटली देर इज नो मीनिंग ऑफ ईच साउंड. Yes, but condition is that these sounds are limited 44. So this is the first layer, means finite set of meaningless sound. All sounds are meaningless separately. That's the first layer, right? Now moving to second layer. For second layer, when you have picked up K from this box, this basket, then I, and then T, and then you make one, you have added, or you have, suppose this there is a block. आपने बचपन में ब्लॉक्स खेला है, बच्चों को खेलते हुए देखते होगे. तो सपोज ये एक ब्लॉक है, यहाँ आपको फिट करना है. तो आपने क्या किया? You have fit KIT. So your mother will teach you what is this. So you will pronounce it's kit. So that there is a kit will come in your mind. That's a kit, right? It's a kind of kit or something will come in your mind. Yes, this is a kit. Then next time you may pick up, you may
take from here, you may say that's a bin. bin, bin. So that's a new word, that's a meaningful unit, bin. The same they are saying. They are saying that there are two levels of sound. First is this, and second is this. This is limited set but meaningless sounds. This is infinite. This is finite or limited. These are infinite units you can make with the finite meaningless sound. Interesting. I'm writing in other words. That's a from finite, from finite meaningless, meaningless sounds, you will make infinite, infinite, infinite meaningful full unit. Interesting fact, very interesting. Why? Because with the finite but meaningless sound, you will make infinite meaningful units. कितने वर्ड्स बना सकते हो आप? ये 44 लिमिटेड साउंड्स हैं आपके पास, जो 43 नहीं है, 45 नहीं, 44 है। लेकिन ये फाइनाइट साउंड से आप कितने सारे इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस यू कैन मेक, कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो। सो दिस इज duality, right, of patterning. So the same they are saying, duality of patterning, right? Now this two-tiered structure is what gives human language its immense creative power and efficiency. ये जो दो layers है, first layer and second layer. First, when you were a very small kid, then you listened and grasped number of sounds, right? Separate sound, m, p, ch, t, the, Hindi, English, whatever. Then your mind, your brain started making a new words, so small words, two letter words. Go, right? Hi, bye. This way you started join the two sounds, and now you can make n number of new words, sounds, phrases, not sounds, phrases, sentences, right, with the 44 sounds. So this is two-tier structure. Language is two-tier structure. What gives human languages immense creative power and efficiency. Once you have acquired 44 sounds, your brain is clear with the 44 sounds. Now you can play with the sounds and you can make number of creative sentences, uses, phrases, and paragraphs, write ups, whatnot, right? Now, operation in English, level 1, that is when we talk about English. So, then there are two layer, phonology, and second one is morphology. Level 1 is phonology. Phonology is sound, that's a sound, phonology. So, English employs approximately 44 sounds. Why they are saying approximately? Because you know that 44 phonemes is the smallest significant sound, and which is divided into two parts. That's a consonant, 24 consonants, right? And 20 vowels or diphthongs. Diphthongs are also called gliding sounds, है ना? Gliding sounds. So diphthongs are means two monophthongs or combination of monophthongs are called diphthongs. You know that. Now approximate means we have studied allophones also. Allophones. And allophones means that's a contextual
contextual variants are called allophones. So that is also different sounds of a phoneme. Variation, variant, different sounds or variations of sound of a single phoneme is called allophones. And that is why they are saying, though there are 44 sounds, but sometime one phoneme may have different another little variations of one phoneme. So that is why they are saying approximately 44 phonemes. These sounds are meaningless in isolation. We have already discussed. For example, K, right? So K refers to nothing. What K? But this set of sounds is finite. We know that set of sounds is finite. Sorry. Set of sound is finite. Oh my god. Wait a minute. Wait. These set of sounds are finite, right? And mhm, finite and manageable to learn and produce. We can learn. Now come to layer 2, meaning layer or morphology and lexicon. Morphology means we are talking about words. Lexicon, which are the part of diction, right? So the finite set of meaningless phonemes means 44 IPA symbols, right? Are meaningless phoneme, finite set, 44 finite phonemes, IPA symbols, is combined and recombined according to rules of phonotactics. So these phonemes are combined, sometimes recombined according to the rules of phonotactics. Phonotactics means phonological process which is suitable और feasible to our tongue. इस तरह से भी समझ सकते हो उसको. feasible feasible to our tongue, possible to our tongue, right? मतलब जो बोलते बने, नहीं बनेगा तो हम सैमर करेंगे या क्लियर वॉइस नहीं आएगी. फोनोटैक्टिस इज दिस, राइट? For example, sometimes we delete the word, sometimes we speak, add something, right? So that is rules of phonotactics. To create potentially infinite number of meaningful words, morphemes and sentences. तो वो जो हमारे टंग में पॉसिबल है, सूट होता है, इसीलिए दे आर टेलिंग दैट पोटेंशियली इनफाइनाइट, जो पोटेंशियली पॉसिबल है नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, फनीम्स एंड सेंटेंसेस, राइट? सब कुछ हम इससे वो मीनिंग लेस साउंड से ये वर्ड्स, फन मॉर्फीम्स और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. एग्जाम्पल 3 phoneme, right? What are the 3 phoneme? These 3 phoneme. K, A, T, cat, can be combined as cat. तो इससे क्या बन गया? Cat. सॉरी, फिर से एक मिनट. Cat, जिसको हम लेटर में cat लिखते हैं, विच इज़ मीनिंगफुल. जब आपने तीनों को मिला दिया तो कैट बन गया. कैट मतलब एक एनिमल, मीनिंगफुल, राइट? So that's a cat. Okay. By simply rearrange them, right? A completely different meaning, है ना? We get act. अब आपने इसको क्या कर दिया? इसको ऐसे अरेंज कर दिया. ए पहले लिया, फिर की और टे, सेम लेटर ले रहे हो आप, लेकिन आपने इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया तो वो बन गया एक्ट. नया वर्ड, मीनिंग नया, है ना? दिस द ब्यूटी ऑफ सेकेंड लेयर. सो फनीम्स आर लिमिटेड. These are 44 phonemes
एंड कॉम्बिनेशन और पैटर्निंग इज कॉल्ड फोनोटैक्टिक्स, है ना, जिसको हम कंबाइन करते हैं और फिर नया वर्ड बनाते हैं। और नया वर्ड क्या बनाते हैं हम? हमने वी हैव टेकन PIN, सो वी हैव मेड पिन, है ना। इसी तरह से हमने दूसरा लिया SPN, तो क्या SPN, सॉरी, AT, स्नैप्ड, है ना। अब स्नैप्ड एक्चुअली पास्ट टेंस, ये क्या बोल रहा है? आर्केइक पास्ट टेंस। स्नैप का पहले अब नहीं यूज़ होता है स्नैप्ड, है ना, स्नैप्ड, राइट। तो ये आर्केइक अब नहीं होता, विच इज़ नॉट इन यूज इज कॉल्ड आर्केइक, पर बनता तो था। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन से हम मीनिंगफुल नया वर्ड बना लेते हैं। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डुअलिटी? लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है एफिशिएंसी डुअलिटी का। इफ एवरी डिस्टिंक्ट मीनिंग रिक्वायर्ड अ यूनिक नॉन डिकम्पोजेबल साउंड, the vocabulary would be enormous and impossible to learn like animals' calls. Duality allows us to reuse the same small set of sounds to create millions of different words, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि if every distinct meaning required a unique non decomposable sound, the vocabulary would be enormous and impossible to learn, तो फिर हम उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। तो डुअलिटी क्या करती है? अलाउज अस टू रीयूज द सेम स्मॉल सेट ऑफ साउंड्स। तो हर बार हम इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाते, बल्कि डुअलिटी अलाउज अस टू रीयूज द स्मॉल साउंड, सेम स्मॉल सेट ऑफ साउंड, है ना, छोटे छोटे साउंड्स को मिला के टू क्रिएट मिलियंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जिससे हम मिलियंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा, आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से मिलियंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हम बना ही रहे हैं, है ना। दूसरा प्रोडक्टिविटी, डुअलिटी इज द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो डुअलिटी के कारण कि एक पहला नॉन इनफाइनाइट नंबर बट मीनिंगलेस साउंड को लेके हमने इनफाइनाइट वर्ड्स बनाए, तो दैट इज प्रोडक्टिविटी बाय कंटिन्यूअली कंबाइनिंग द फाइनाइट सेट ऑफ साउंड्स इन नॉवेल वेज। तो हम कितने वर्ड्स बना पाते हैं? वी कैन प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड सेंटेंसेस वर्ड्स दैट हैव नेवर बीन स्पोकन बिफोर। कितना, अभी भी, मतलब since long time, long back, we are using such words, 44 sounds, and every day we listen new words, sentences, phrases, but there is lots, enormous possibility to create new words, right? So this is the beauty of duality of patterning. So finally, in essence, duality of patterning allows us to be economical at the phonetic level, है ना। ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हम। वी हैव टू बी इकोनॉमिकल एट फोनेटिक लेवल, लिमिटेड साउंड्स, नहीं तो फिर तो कोई भी साउंड ले लो, कुछ भी बनाओ, तो वही उस हमारे पास लिमिटेड साउंड्स है, 44 ही हैं, राइट। वाइल बीइंग लिमिटलेस सिमेंटिक लेवल, जिसका अनलिमिटेड मीनिंग्स है, लेकिन हम बनाने के लिए खूब सारी चीज़ें इनमें से ही बना पाएंगे, ताकि हमारा सिमेंटिक लेवल डिस्टर्ब ना हो। जिस जो भी साउंड बनाएंगे उसका मीनिंग होगा, है ना। तो सिमेंटिक मतलब मीनिंग बहुत ज़रूरी है, वो क्लियर होना चाहिए। तो दैट इज़ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ duality of patterning. So this is the first question I have taken. Now I'll be making another video for another topic. So thank you so much. God bless you.